There are 3 different positions, so you have to set up and adjust your sight 3 times without losing focus or concentration. And of course, a set of 7 shooters are already on the blocks. They are ready to shoot their way to glory. And among them, we have, of course, the very, very special Sift Kumar Samra, who's taking part here on behalf of Guru Nanak Dev University. The reason is that she holds the world record in the 50-meter rifle 3 position. Remember, she did this in 2023, and of course, she has been a remarkable story. An accidental shooter, she used to call herself. She was very good in medicine. She cracked one of the toughest exams in India, which is a joint entrance for medical students, the NEET exam. She did 1 year of MBBS, but suddenly she shifted track and shifted course, and from being the medicine woman, she is now a serial medal winner. Sift Kumar Samra, and that's a story which has literally inspired so many new athletes and shooters to take up to the sport. While we hear about Sift, we know about Sift, and we'll be seeing her whether she's able to raise the bar even further in this competition. It remains to the other shooters. Like in this group, you have Yuktisha Singh, you have Kwaish, you have Mahit Sandhu, Khushi, Vedanti, and of course Soumya Gupta, whether they will be able to challenge her as much as possible. So here's letting you on to the commentary as we take you through the live action for another spectacular round of shooting. ये प्रसारण सीधा आप तक पहुंच रहा है राजस्थान से। वीरता और रंगों की धरती से राजस्थान का नाम आते ही राजपूतों के साहस और उनकी अदम्य आत्मसम्मान की परंपरा याद आती है। राजस्थान का जिक्र होता है तो रेगिस्तान का भी ख्याल आता है, एक ऐसा भूप्रदेश जहां जीवन संयम, सब्र और हिम्मत की कसौटी लेता है। और फिर राजस्थान शिल्पकला का भी तो प्रदेश है। बांधनी हो या मीनाकरी, हर रचना में नज़ाकत, ठहराव और निपुणता दिखती है। और शूटिंग, ये खेल इन सब गुणों का संगम मांगता है। योद्धा सी शारीरिक दम, लोहे सा मनोबल और शिल्पकार जैसी सूक्ष्मता, और यही सब इन खिलाड़ियों को दिखाने की आज आवश्यकता है। सिफ्त कौर सामरा के बारे में हमारे एंकर ने आपको बताया। ओलंपियन रह चुकी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। इसी प्रतियोगिता के फाइनल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं के नाम है। उसके अलावा भी कई युवा प्रतिभा से लैस खिलाड़ी शिरकत करते हुए इस प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, 3 पोजीशन इवेंट, यानी कि 3 अलग अलग पोजीशंस से आपको शूटिंग करनी होती है, जिसमें पहला दौर इस वक्त अग्रसर। नीलिंग पोजीशन जो सबसे मुश्किल माना जाता है, घुटने के बल बैठकर आपको 50 मीटर दूर जो टारगेट है उस पर निशाना लगाना पड़ता है। और क्यों ये सबसे मुश्किल स्पोर्ट माना जाता है, मुश्किल इवेंट माना जाता है शूटिंग में, थोड़ा सा उसका अंदाजा देते हैं आपको। ये जो राइफल आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, इसका वजन करीब करीब 7 से 7.5 किलो के बीच में। तो इतनी भारी राइफल को तो आपको उठाना ही है। और इसके अलावा जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, वो 50 मीटर दूर है। 50 मीटर का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके और टारगेट के बीच में जो दूरी है उसमें 5 बैडमिंटन कोर्ट समाये जा सकते हैं। और सामने जो टारगेट है वो बहुत छोटा, पूरा टारगेट बोर्ड जो है उसका साइज डिनर टेबल पे जो एक क्वार्टर प्लेट या साइड प्लेट होती है उसके बराबर। और उसमें भी आप कोशिश करते हैं सेंटर को भेदने की, इनर रिंग को भेदने की। और वो इनर रिंग का जो डायमीटर है वो केवल 1.04 सेंटीमीटर, यानी आपके फ़ोन में जो USB पोर्ट होता है जिसमें आप चार्जर घुसाते हैं, वही जो उसका साइज होता है उतना ही साइज उस इनर रिंग का। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लाल टोपी में वहां खुशी चुरसामा, जो कि पारुल यूनिवर्सिटी से आती हैं, 22 वर्षीय। और आप देखेंगे कि खिलाड़ी इस वक्त एक शेड के नीचे हैं। इंडोर रेंज है, लेकिन इनके और टारगेट के बीच में जो एरिया है वो ओपन है। और क्योंकि 50 मीटर का डिस्टेंस है, इसलिए हवा के बहाव से भी
आपका जो शॉट होता है, आपकी जो बुलेट होती है, वो अपनी दिशा भटक सकती है। तो हवा के रुख को मायने रखते हुए खिलाड़ियों को निशाना लगाना होता है। कुल 60 शॉट, 90 मिनट का समय, 60 शॉट आपको लेने हैं, जिसमें से 3 नीलिंग पोजीशन में जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उसके बाद 20 शॉट आपको लेने रहेंगे प्रोन पोजीशन में, यानी छाती के बल लेटकर आपको निशाना साधना होगा। और उसके बाद अंतिम दौर में स्टैंडिंग पोजीशन में आपको 20 शॉट लेने होंगे। हर शॉट में ज्यादा से ज्यादा आप 10 पॉइंट हासिल कर सकते हैं। ये रिले टू का सीधा सीधा मतलब ये दूसरा बैच है शूटर्स का। कुल 24 शूटर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। माफ कीजिएगा, 37 शूटर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। और हर शूटर को एक 4 बैच में बांटा गया है। इस वक्त ये दूसरे बैच का दौर चल रहा है। स्क्रीन पर सिफ्त कौर सामरा 24 वर्षीय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस वर्ष ब्यूनो एरी अर्जेंटीना में हुए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया था सिफ्त ने। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल जो कि होने वाला है अब से कुछ समय बाद दोहा में, कतार में, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 का स्थान इनके नाम, तो जाहिर सी बात है कि उस प्रतियोगिता में भी फेवरेट्स की सूची में उनका नाम रहेगा। इस वक्त स्क्रीन पर ख्वाहिश शर्मा 19 वर्षीय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। और ठीक उनके पीछे सिफ्त कौर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हुए। आपको याद दिला दें, नीलिंग पोजीशन सबसे मुश्किल, और अक्सर घुटने पर जब खिलाड़ी बैठते हैं तो एक नीलिंग रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थोड़ी सी कुशनिंग आपको मिलती है। कोचेस बताते हैं कि एक ट्राइपॉड पोजीशन में आपको बैठने की जरूरत होती है। ख्वाहिश शर्मा राजस्थान से ही आती हैं। हालांकि शूटिंग में इनकी शुरुआत कोलकाता में हुई, जहां पर ये स्कूलिंग कर रही थी। स्कूल में ही शूटिंग से रूबरू हुई, इंटरेस्ट जागा, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रोफेशनल शूटर बनना है। लेकिन कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान घर आई और उस समय लगा कि शायद मुझे भी किसी दिन भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना है। तो घर पर एक दीवार को तोड़कर शूटिंग रेंज बनाया गया, जिस पर इन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की। और इन सभी शूटर्स की कुछ इसी प्रकार की कहानी रही है। सिफ्त कौर सामरा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वॉलीबॉल खेला करती थी पहले, लेकिन इस वक्त एक बड़ा नाम भारतीय शूटिंग में। एकनिष्ठ होकर, एकाग्र होकर, पूरा समय लेकर आप निशाना लगाते हैं। नीचे आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि कुल 60 शॉट आपके बोर्ड पर लगने चाहिए और हर शूटर की रफ्तार अलग रहेगी, क्योंकि आपके पास कुल 90 मिनट का समय है और आप जैसे चाहें वो 90 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर अंक जो आपको मिलेंगे वो एक्यूरेसी पे मिलेंगे। युक्तिशा सिंह छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से, सिफ्त कौर सामरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, ख्वाहिश शर्मा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, महित संधू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, खुशी चुड़सामा पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात से, वेदांती भट्ट सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से, और सौम्य गुप्ता थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला से।
ये वो खिलाड़ी हैं जो इस बैच में शिरकत कर रहे हैं। स्क्रीन पर वेदांती भट्ट, टीनेजर खिलाड़ी, इस वक्त एक संकल्पित मुद्रा में नजर आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक बबली पर्सनालिटी, बड़ी चुलबुली स्वभाव की हैं खिलाड़ी। जूनियर डिवीजन में ऑल इंडिया रैंक नंबर 4 हैं ये। सौम्य गुप्ता 20 वर्षीय, कहती हैं कि पढ़ाई से बचने के लिए शूटिंग की शुरुआत की थी। स्कूल में 0 पीरियड हुआ करता था जिसमें पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन तभी स्कूल में शूटिंग रेंज बना, शुरुआत हुई और वहाँ पर इनके पास एक विकल्प था कि अगर पढ़ाई से बचना है तो 0 पीरियड में जाकर शूटिंग कीजिए। तो चली गई शूटिंग करने, राइफल देखी, पिस्टल देखी और कहा राइफल बहुत बड़ी लगती है, बहुत कूल लगती है, इसलिए मुझे तो राइफल ही करना है। और आज यहां पर है युक्तिशा सिंह इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। शायद इन सभी खिलाड़ियों में सबसे अलग, क्योंकि ये एकमात्र हैं जो ये कहती हैं कि नीलिंग पोजीशन मेरा फेवरेट है। सबसे ज्यादा मेहनत इस पोजीशन पर इन्होंने की है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट भी इस पोजीशन में हुई है इनकी, और इस वजह से ये कहती है कि नीलिंग पोजीशन मेरा सबसे फेवरेट है। अमूमन तौर पर सबसे मुश्किल ये पोजीशन माना जाता है। आप देख रहे होंगे सफेद जैकेट पहनकर ये सभी खिलाड़ी शूटिंग कर रहे हैं, और उस सफेद जैकेट का अपना एक महत्व। स्टिफ लेदर मटेरियल से ये जैकेट बनी होती है, आपके शरीर के हिसाब से टेलर मेड, और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इस जैकेट का इस्तेमाल होता है। खैर इसी बीच हम देख रहे हैं पारुल यूनिवर्सिटी की खुशी चुडसामा ने नीलिंग पोजीशन के अपने 20 शॉट पूरे कर लिए हैं। 189 का कुल स्कोर उनका उन पहले 20 शॉट में। याद रखिए हर शॉट में ज्यादा से ज्यादा आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी 20 शॉट में कुल 200 अंक, पूरे 60 शॉट में ज्यादा से ज्यादा 600 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। नीलिंग पोजीशन के बाद प्रोन पोजीशन और उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन। हर खिलाड़ी के पास 90 मिनट का समय, और हर खिलाड़ी अपनी रफ्तार से चल सकता है, ये निर्णय कर सकता है कि कौन से पोजीशन को कितना समय देना है। क्योंकि याद रखिए यहां पर रफ्तार नहीं, एक्यूरेसी, सटीकता के अंक आपको मिलते हैं। उस जैकेट की हम बात कर रहे थे। एक शूटर को इस जैकेट को धोने की भी अनुमति नहीं होती है, क्योंकि एक बार अगर आप इस जैकेट को धो देंगे तो वो जो स्टिफनेस प्रदान करती है ये जैकेट, जो उसका पर्पस है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और रेजर थिन मार्जिन्स का ये खेल, 9 और 10 के बीच में जो मार्जिन है वो एक पेंसिल से बनाई लकीर से भी कम। इस वजह से हल्की सी भी मूवमेंट आपकी बॉडी में, हल्की सी भी कंपाहट आपके शरीर में, और आप निशाना चूक जाएंगे। और इसलिए ये जैकेट पहनी जाती है ताकि आपको स्थिर रख सके। जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक चुनौती भी है, इतनी भारी, इतनी वजनदार जैकेट पहनकर, इतनी वजनदार राइफल उठाकर इतनी दूर निशाना लगाना। जो सेंटर है
जिसको भेदने पर आपको 10 अंक प्राप्त होते हैं प्रति शॉट। उसका साइज शर्ट के एक बटन से भी छोटा, और इस वजह से खिलाड़ी एक निष्ठ, एकाग्र। खुशी चुडेसामा अब तैयारी करते हुए प्रोन पोजीशन की। हर खिलाड़ी का तैयारी करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। खुशी से कंपटीशन के पहले मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि कंपटीशन से पहले एक हैवी ब्रेकफास्ट करना वो पसंद नहीं करती हैं, और आज चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ये मुकाबला, जिसकी शुरुआत 11 बजे के करीब होनी थी, लगभग 1-1.25 घंटे से डिलेड। और जाहिर सी बात है कि जब शुरुआत में वो डिले होता है तो खिलाड़ियों के लिए वो एक एंजाइटी का दौर, एक नर्वसनेस का दौर, वो जो प्रेपरेशन होती है वो ऑफ ट्रैक हो जाती है। सिफ्थ कौर सामरा अपना समय लेते हुए अभी तक 14 शॉट्स उन्होंने अर्जित किए हैं, 131 का स्कोर। कहती हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी तकनीक में, जिनको यहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में आजमाना चाहती हैं वर्ल्ड कप फाइनल्स से पहले। और जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनसे पूछा, तो क्या मेडल पर निशाना नहीं है क्या आपका? क्या सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप इस कंपटीशन को देख रही हैं? और जाहिर सी बात है, सामने से जो रिएक्शन आया वो अनॉयंस भरा। जी नहीं, मेडल तो पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है, मेडल तो जीतना ही है। यूनिवर्सिटी ने इतना कुछ दिया है, यूनिवर्सिटी को मेडल जिता के लाना है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे खिलाड़ी नीलिंग राउंड पूरा कर कर तैयारी करते हुए प्रोन पोजीशन की। ख्वाहिश शर्मा 20 जो शॉट्स लिए उन्होंने, उसमें कुल 194 का स्कोर अर्जित किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की यह शूटर इस वक्त स्कोरबोर्ड में अव्वल स्थान पर। 19 वर्षीय युक्तिशा सिंह भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं, 20 शॉट में 192 का उनका स्कोर। युक्तिशा जो कि आती हैं एक शूटिंग फैमिली से, इनके पिता भी शूटर थे और कहीं ना कहीं उनके प्रोत्साहन के बाद ही इन्होंने राइफल उठाई। पहले एयर राइफल पर अपना हाथ आजमाया और उसके बाद 50 मीटर 3 पोजीशन पर शिफ्ट कर गई। 50 मीटर प्रोन पोजीशन इवेंट में भी शिरकत करते हुए नजर आती हैं। सात से 8 किलो के बीच इस राइफल का वजन, तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ की, शोल्डर मसल्स की, अपर बैक में मजबूती की जरूरत, ताकि आप राइफल को ज्यादा से ज्यादा स्थिर रख सके। और इसीलिए हर एक खिलाड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग कोर के साथ एक स्थिर पोजीशन हासिल कर सके। हर एक शॉट में अपना समय लेते हुए सिफ्थ कौर सामरा। चलिए, पहला दौर लगभग समाप्त।
20 शॉट नीलिंग पोजीशन में लिए गए और अब तैयारी हो रही है प्रोन पोजीशन की। ये प्रोन पोजीशन आपकी सांस किस तरह से चलती है उसकी भी अपनी एक अहमियत। अमूमन तौर पर कोचेस बताते हैं कि सांसों के बीच में आपको अपना शॉट लेना रहता है, यानी कि जब आप सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं उसके बीच में वो एक स्प्लिट सेकंड का पॉज होता है जब आपकी सांस रुक जाती है। और जब वो सांस रुक जाती है तब उस स्प्लिट सेकंड के लिए आपका जो शरीर होता है सबसे ज़्यादा स्थिर होता है और उसी वक्त आप ट्रिगर दबाते हैं। और इसलिए आप देखेंगे वो भारी भरकम जैकेट पहनकर शूट किया जा रहा है। प्रोन पोजीशन के लिए एक बेल्ट लगाई जाती है, जैसा आप इस वक्त देखेंगे खुशी चुडासामा को लगाते हुए वो बेल्ट कंधे पर, यानी पूरा राइफल का जो वजन है वो कंधे पर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का ये मंच, जहां पर पोटेंशियल को हम प्रूफ में तब्दील होते हुए देखते हैं, क्षमता को सफलता में तब्दील होते हुए हम देखते हैं। कुल 23 अलग अलग खेलों में 5000 से ज़्यादा खिलाड़ी देश के कोने कोने से अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए शिरकत कर रहे हैं। और शूटिंग का ये खेल रेजर थिन मार्जिन्स का सामने आप देखेंगे काले रंग का एक मॉनिटर खिलाड़ियों के बिल्कुल सामने। ये जो मॉनिटर है वो सीधा कनेक्टेड है टारगेट बोर्ड से। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग यहां पर हो रही है, यानी हर शॉट लेने के बाद खिलाड़ी ये देख सकता है कि उसका शॉट टारगेट बोर्ड पर कहां जाकर लगा। और इस वजह से कई खिलाड़ी उत्साहित थे, क्योंकि हर शूटिंग रेंज पर ये जो फैसिलिटी है आपको नहीं मिलती है। फ्लोर लेवलिंग का अपना एक महत्व। कई बार जो शूटिंग एरिया होता है वहां पर अगर हल्का सा जो फर्श है वो थोड़ा सा ऊंचे नीचे हो तो उससे आपको अपना बैलेंस बनाने में काफ़ी मुश्किलात आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जगतपुरा शूटिंग रेंज में सभी इंतजामात टॉप नॉच। हर एक इक्विपमेंट का अपना महत्व। हाथ को स्थिर रखने के लिए आप देख सकते हैं कि उस जैकेट से ही एक एक्सटेंशन निकलता हुआ, ताकि शरीर में कम से कम कंपाहट हो। तो अपनी नजरें जमाते हुए सभी शूटर्स प्रोन पोजीशन के लिए। सौम्य गुप्ता आपकी स्क्रीन पर, उनकी कोच खुशबू प्रीत भी यहां पर मौजूद।
7 साल तक एयर राइफल में इन्होंने शिरकत की और पिछले साल ही 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। एयर राइफल और राइफल में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, आपको ये बता दें। एयर राइफल में एक छोटा सा गैस सिलेंडर लगाया जाता है गन पर और हवा के प्रेशर की वजह से वहाँ पर आप पैलेट्स फायर करते हैं। तो यहाँ आप प्रॉपर एम्यूनेशन का इस्तेमाल करते हैं, गोलियों का इस्तेमाल करते हैं और हर खिलाड़ी की एम्यूनेशन भी अलग। एम्यूनेशन में बदलाव से भी आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप जिस एम्यूनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं उसी के साथ आप उतरते हैं कंपटीशन में। जिन कपड़ों में आप प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के साथ उतरते हैं आप कंपटीशन में। तो पहले दौर के बाद जो स्कोर्स रहे वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 194 अंक ख्वाहिश शर्मा ने हासिल किए, सबसे आगे अभी तक इस कंपटीशन में। माहित सांधु बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, 22 शॉट ले चुकी हैं अभी तक। 215 का उनका स्कोर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ये आती हैं और रेंज में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि जितने भी समर्थक पहुंचे हैं जो समझते हैं शूटिंग के इस खेल को, वो जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का ध्यान वो भंग नहीं करना चाहते। Right, so a quick reminder of how this sport works. You have to take 60 shots in 3 different positions, 20 shots in the kneeling position, then 20 shots in the prone position, which you see right in front of your screens at this moment, and then 20 shots in the standing position. Currently in the prone position, where the athlete may lie on the bare surface of the firing point or on the shooting mat. He or she may also use the mat by resting their elbows on it. The body must be extended on the firing point with the head towards the target. And the rifle, importantly, may only be supported by both hands and one shoulder. So you can't keep the rifle on the ground. Nearly an 8-kilogram rifle, a heavy rifle. And you need to keep it as steady as possible, as stable as possible. Hence, the sport of shooting not as easy as it looks on the screen. A sport of razor thin margins. You need to have pinpoint accuracy. Kushi Chudasama was the first to complete the kneeling round, but is taking her time in the prone position. Remember, each athlete has their own preferences. Some like the standing position more, some like the prone position more. And then there are the odd ones
like Yuktisha Singh in this particular batch, who say kneeling position the most toughest is my favorite. Mahit Sandhu, meanwhile, racing along. And so is Soumya Gupta. 30 shots in. Siftkar, the world champion, Olympian, the biggest name in this competition, taking her time. Remember, we are in Jaipur, Jagatpura, the land of Rajasthan, which has given this country plenty of shooters. Of course, the first shooter from India to represent the country at the Olympics was Dr. Karni Singh, or Maharaj Karni Singh, who belonged to Rajasthan. The first shooter from India to win an Olympics medal. Back then, Major Rajyavardhan Singh Rathore, today Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, belonged to Rajasthan. Here's Siftkar Samra in front of you. Comes from Faridkot in Punjab, representing Guru Nanak Dev University of Amritsar here. An MBBS student at a point, a volleyball player at a point, multi-talented and very, very popular amongst the Indian fans who follow and support shooting. Last year she represented the country at the Olympics as well. It didn't quite go according to plan. And after the competition, she minced no words when asked what went wrong. She said, "Perhaps I put the Olympics on a pedestal. Perhaps in my own brain I thought that this is too big an event. And therefore I was a little bit overwhelmed." And since then, she has been working on mental stability and steadiness, a control on her emotions, holding her nerves so that she doesn't get overawed by any situation. Over here, of course, making some experiments, yet routing for a medal. Remember, this is just the qualification round. We have 8 shooters in front of you. In fact, 7. This is relay 2 or batch 2. We have 4 batches. And all those shooters, after they are through the qualification round, amongst them in the cumulative score, top 6 will be making it to the finals. If you're a right-handed shooter, the left forearm with which you hold the rifle, in technical terms called the sling forearm, must form an angle not less than 30 degrees from the horizontal, measured from the axis of the forearm. On your screens, Khushi Chudasama of Parul University went to a military school in Nasik and picked up shooting from there. That's Coach Chandramohan Tiwari, the coach of CSMJU. 3 of his disciples participating in this particular event. In this relay, Yuktisha Singh,
is from that university. Soumya Gupta struggled with the kneeling position, fell behind a little bit, but has come back well. She's taking her time, making her shots in the prone position. That's Vedanti Bhatt on your screen. She was in 7th standard when she went to a shooting range, and that's where the bug bit her, and has been in love with the sport ever since. Of course, her dream is of winning an Olympic gold for India one day. The next big competition that she is looking to participate in is the Asian Junior Championship that would be held in Delhi in the start of 2026. There's the target in front of you. The black ring that you see in the center, that's all. That is the target. Size of a quarter plate or a side plate that you see on your dinner table. Even in that, there's a center circle, which is the size of a button on your shirt. And interestingly, in that frame, you saw some red flags on the range. Those tell you the direction of the wind. Remember, since the distance is so long, wind can affect the trajectory and the direction of the bullet. And hence the red flag tells the shooter which way the wind is blowing. Right at the bottom of your screen, those red flags, they tell you currently the winds are quiet. The weather gods have kept things in control. Sunlit range this, so visibility is pretty good. .5 caliber bullets are used. Distance of 50 meters. Nearly 2 basketball courts can be constructed in that distance. 5 badminton courts can be constructed in that distance. That's how far the target is. And the margins razor thin. Khwai Sharma had an absolute ball in the first round, where she scored 194 in the first 20 shots in the kneeling position. The third shooter in this frame, Khwai Sharma, she's taking her time in the prone position. Here she is. As I mentioned earlier, during the lockdown, she decided to pursue shooting professionally. And then, in the next 2 years that followed, she participated in multiple competitions, won 7 gold medals. And that's when her family knew that she is indeed a prodigy. Vedanti Bhatt has got the effervescence of a teenager. The passion, the zeal for the sport can be seen in her eyes all the time. You go and talk to her and she'll tell you about the sport.
That passion shows in every action of hers. I went to her to wish her all the best. Asked her a couple of questions about technical matters of the sport. And she was warm-hearted enough to let me know about each of them in detail. Even took out the box of ammunition from her bag. Asked me, do you want to touch them? See, this is how the bullet is. That's how passionate she is about the sport. You know, they say, when people talk about things that they love, there's a different glitter in their eyes, there's a different sparkle in their eyes, and that is what you could see in Vedanti Bhatt's eyes there when she was talking about the sport. Meanwhile, Soumya Gupta, right in front of your screen, after every shot that she takes, turns around, possibly to look at her coach, who's in the attendance, in the audience, Khushbu Preet. Soumya obviously representing Thapar Institute of Engineering and Technology, 20 years of age, Soumya. So Mahit Sandhu is done with the prone round as well. 40 shots in, 20 in the kneeling position, 20 in the prone position. And a score, cumulative score of 390. Siftkaur Samra is also done with the prone position. And a little bit behind right now, 386. There in the brown cap, Khwaish Sharma's father. Looking just as tensed, almost as if he himself is on the shooting line. Right, Soumya Gupta has been struggling with something. And she's having a conversation with the range officers who are obviously responsible for ensuring smooth conduct of the match, of the event, and also they're supposed to ensure safety. Wonder what she is struggling with. Focus, precision, and pinpoint accuracy and stability. These are the 4 pillars of shooting. You load a bullet, and between breaths, you fire your shot. Right, as you can see on your screens, some shooters already ready to go to the standing position. Sounds like the easiest position, but it isn't. Because once again, you're holding that nearly 7.5 kilo rifle. You're wearing the jacket, which ensures that there is as little movement in your body as possible. No shakes, no jerks. And a lot of shooters, because they stand for a long time, taking their shots every day in practice, every day in competitions, they end up with flat foot as well. So that's a price that you have to pay if you want to achieve glory at the highest level. Of course, here at the Khelo India University Games, you want to represent your university
Make them proud. Bring a medal for them. After all, it's a platform where talent becomes testimony, where ability gets applause, where raw talent shows evidence. A total time of 90 minutes. So if you're done with your two positions, you can take your time, if you have ample of it remaining, to regather your thoughts, to take a deep breath, to ensure that you're in the right frame of mind, right mental disposition before you go on. That's Mahit Sandhu in front of you, having a conversation with her coach. Wonder what this conversation is. She's pointing to her right shoulder. Is there some sort of twitch there, some sort of pain there that she's feeling? Right, so most shooters, in fact every one of them, now done with the prone position. And the final 20 shots remain. These are the scores. After 40 shots each, 20 of them taken in the kneeling position, 20 of them in the prone position. Khwai Sharma and Mahit Sandhu leading with 390 points each. Remember, this is only relay 2. And we are going to have a total of 4 relays, means 4 batches. And at the end of it, the cumulative score of all the shooters will form the ranking chart. And amongst them, the top few will make it to the finals. So Sift Kaur Samra, the favourite, trailing by 4 points in this particular relay. 386 points to her name. Yuktisha Singh behind her with 383. Khushi Chudasama, who has been the fastest shooter on display, gets through her shots the quickest, it seems. 381 points to her name. Vedanti Bhatt with 379. And Soumya Gupta with 370. So you can use this stand to load the rifle, but when you're shooting, you have to be holding it in your hands. I'll just read out the rules of the standing position. The athlete must stand free without any artificial or other support, with both feet on the firing point surface or the shooting mat. The rifle may be held with both hands and shoulder, or the upper arm near the shoulder and the part of the chest immediately adjacent to the right shoulder. This is of course for a right-handed shooter. The cheek may be placed against the rifle stock. The rifle must not touch the jacket beyond the apparent center line of the chest. The left upper arm, if you're a right-handed shooter, and elbow may be supported on the chest or the hip. If a belt is worn, the buckle or fastening must not be used to support the left arm or elbow. There must be clear visible gaps between rifle and any other part of the athlete's clothing, the athlete's face, and the rear sight, including a blinder if attached to the rifle and between both hands.
That red line, the shooting line, the firing line, you have to be behind it. The black monitor kept in front on the floor gives you the score immediately in real time, and hence helps the shooters adjust. The flooring obviously matters, and based on whatever information I gathered from the shooters participating in this event, they said that the flooring is pretty nice, even leveled. Of course, they had a pre-event training session yesterday, which would have helped these shooters get acclimatized to the conditions, to the range. Yuktisha Singh in front of your screen. Started with the air rifle once again back in 2021 and has played 4 national shooting championships since then. Her father was a shooter. Her brother was a shooter. And of course that dream of winning the Olympic gold for India runs in the family. There's Yuktisha. Alongside her, Olympian Sift Kaur Samra representing Guru Nanak Dev University. Right, so the beginning of the standing position round now. Making sure that you're as stable as possible, hence that slow movement of the head, because even a subtle jerk could make you miss your aim, which is 165 feet or 50 meters away. The 10 ring that you're looking to target is not any bigger than the USB-C port on your mobile phone. The rifle's heavy, the target's far away. You have to take the wind into account. You have to keep a steady frame and a calm and composed mind. You need to be shooting between breaths, so everything has to be under 100% control. Each thing, from your apparel to your equipment, can make a difference. A different ammunition can make a difference. A different piece of clothing can make a difference. Of course, even the shoes that the shooters are wearing are specialized for shooting. They give your ankle some support, which enables you to stay as still as possible in the standing position in particular. Because you're wearing a lower which is made of canvas or stiff leather. It tends to pull your legs inwards together, and that's where those ankle high boots that these shooters are wearing helps to support you. Khushi Chudasama on your screen, medalist at the 66th as well as the 67th National Shooting Championship. Was in a military school in Nasik where she was introduced to the sport of shooting. By the time she left that school, she graduated from her 10th standard. She was already a state level player, and hence her family back in Gujarat said, this is what you should pursue. Vedanti Bhatt, 19-year-old, All India rank number 4 in the junior division.
hasn't quite been able to hit the ground running. 379 points to her name, representing Savitribai Phule Pune University in this competition. Has been looking for that rhythm. Was one of the earliest amongst all shooters to make it to the range today. And hence that delay that happened might have affected her. Trying to get that rifle in the right position before she takes her shot. Silence otherwise in the range. But every time in between when the shots are fired, there's a thunderclap. Yes. Yes, given. I've given. Every shooter has their own way of preparing. Some shooters like to go without any meals. Some of them try to have a light meal. But of course, when there's an hour of delay, an hour and a half of delay, which we experienced today, it just throws them off. So this is a bit of a challenging curve for all these shooters who were waiting in the range for a long time whilst there was a technical failure. And hence that adds to the challenge. And now, as you can see, the grouping of the shots will become a little bit more towards the center in the standing position. Siftkar Samra, meanwhile, 46 shots in, which means 6 shots in the standing position. But Mahit Sandhu from Punjab University, Chandigarh, and Khwai Sharma from LPU, these are the two shooters who have impressed the most thus far. If you automatically finish above an Olympian, that's the biggest confidence booster that you can have. And that is why this platform of Khelo India University Games so important. Such a big stepping stone for all these shooters who worked hard for the majority of their life, given their lives to the sport. Yes, all of them still very young, some of them teenagers, 18 years of age, 19 years of age. Some of them a little older, 22, 24, but still all of them in the first quarter of their life, very young, but all of them have been practicing shooting for 5 years, somebody for 6 years, someone for 7 years, someone for 8 years. So a major part of their life has been dedicated to the sport. And hence, whenever you are on a platform like this, where the whole country is watching you, where you have the chance to shine, the chance to leave an impression, on the entire country, you want to give your best. Tricolor on Siftkar Samra's sleeve there. Focused expression. Trying to keep any negative thoughts away. Well at range this. And of course,
University Games of prime significance. Shooting is a sport where India has done incredibly well at the world stage. I still remember back in 2008, might have been the first ever edition of the Olympics that I closely followed. India won 3 medals. One of them was obviously in shooting. Abhinav Bindra struck gold for the nation. And that was a big achievement. India had won 3 medals in that particular edition of the Olympics. And the whole country was buoyant about it. In the last edition of the Olympics, 2024 Paris, we won 3 medals in shooting itself. Manu Bhakar obviously winning 2 of them. And then obviously Swapnil Khosale winning the bronze medal. We came close to winning a 4th as well. Arjun Babuta finished 4th, and in fact in the mixed team event also we could have won another medal. Our team finished 4th. That was in trap. So India has been doing incredibly well in shooting. All events of shooting combined. And therefore you have seen a rise in the number of participants. Yet experts believe that we haven't quite lived up to our potential, and that's where University Games matter so much. We talk about the success at the Olympic level, and we immediately think of countries like China, countries like USA. And if you follow American sports, you know how important college sports are there in USA. An athlete doesn't need to go through the route of the state and then the federation to reach the Olympics. College sports are big, very passionately followed, very eagerly followed, and hence universities and colleges, they say, have become factories of producing Olympians. And that is exactly the vision with which Khelo India University Games was started. We're obviously in the nascent stages, still in the embryonic stages. This competition only into its 5th edition. Yet you can see the level of competition. Pretty intense. You have Olympic champions. You have India level players, world champions also participating. All young and upcoming players get to rub shoulders with them. No matter what the results are today, at the end of this round, when 19-year-old Khwai Sharma goes back, she can say that she rubbed shoulders with an Olympian. Currently, she's even scoring better than Sifth Kaur Samra. Similarly, 19-year-old Yuktisha Singh playing her first Khelo India University Games could go back and tell that I competed against the best, the world record holder. Yes, Sifth Kaur Samra created the world record in 2023. Not the qualification world record, but the world record in the final of this event. That was back in the Asian Games at Hangzhou, China. So as you can see, Soumya Gupta still in the prone position. There was again some technical error, due to which she was told to take her shots again. No fault of hers there. And these things can happen. We're still a work in progress as a nation striving towards becoming a superpower in the world of sports. All together in the same boat. And there are those flags, the wind indicators, which tell you which way the wind is blowing.
And therefore, how much off do you need to aim? Yes, the bullets travel at a brisk pace, and hence there's not as much effect on the trajectory as much is there, say, on an arrow shot in archery. But then remember, the target board here is much smaller. The difference between points can sometimes be as thin as that of a human hair strand. The target board in front of these shooters, the diameter of it is only 15 centimeters or thereabouts, so nearly 6 inches. And of course, the inner ring which you're trying to target, the center, hardly a centimeter, the diameter of it. In the background, the coach of CSMJU Kanpur, Chandramohan Tiwari. One of his shooters, Anshika, would be participating in relay 3. And she's again a star to watch out for. Participated in the Junior Asian Championship as well as the Junior World Cup, which was held in New Delhi recently. And there, the world record is 622. She scored 619.2. Supports young and upcoming shooters. Had a word with Anshika and she said that I don't even have my own rifle, but I'm using my coach's rifle. Of course, these equipments are expensive, and hence as much praise as you give to Chandramohan Tiwari would be less. It's a heavy rifle, and hence you could see the athletes twitching, trying to shift weight, trying to balance it every now and then. These suits that they're wearing restrict movement. You can't even walk properly when you're wearing these heavy suits, but they're supposed to keep you steady and stable. Siftkaur Samra in front of your screens. 24 years of age, currently ranked number 2 in the world. Moving towards the final stretch. Remember, a total of 60 shots. Oh, and good luck with your buddy in the Mercedes. 525 against Siftkaur Samra's name. But remember, she's 54 shots in. Keep your eyes on Khwaish, who's got 429 points in just 44 shots. But can she maintain, sustain this momentum that she has? Meanwhile, 54 shots in, Mahit Sandhu, now with 526 points, still ahead of the Olympian. Yes, the difference has reduced. She's just ahead by 1 point. However, she's ahead of an Olympian, and that itself should give her some bragging rights. Meanwhile, on the right corner of your screen, you see Soumya Gupta's score has been updated. Earlier, it showed 370, but she was allowed some retakes due to some technical errors, and hence the updated score now 374 in 40 shots. You get a total of 60. 20 in the kneeling position, 20 in the prone position, and 20 in the standing position, which you see right now.
A stable base is required. A strong arm is required, a strong shoulder is required, and most of them all, temperament of the highest order is what these athletes require. Siftkaur Samra has won 4 medals across the ISSF Junior World Cup, 1 gold, 2 silver, 1 bronze, 2 medals in the Asian Championship, 5 medals in the ISSF World Cups. One of them, a gold medal, she won at Buenos Aires earlier this year. Then of course, at Munich in the last World Cup, she ended up with bronze there. Her qualification score was 592. Here 56 shots in, she's on 544. On your screen, Vedanti Bhatt, 474 in her 50 shots. She'll want to give her best in the last 10 now. She would want to hit the center as many times as possible. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन क्वालिफिकेशन राउंड का प्रसारण देख रहे हैं आप जगतपुरा शूटिंग रेंज से। रीले नंबर 2 में इस वक्त 7 शूटर शिरकत करते हुए और कोशिश करते हुए ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने की। 3 अलग अलग पोजीशंस में कुल 60 शॉट्स लिए जाते हैं। 90 मिनट का आपके पास समय होता है। पहले 20 शॉट घुटने के बल बैठकर नीलिंग पोजीशन में लिए जाते हैं, जिसके बाद प्रोन पोजीशन में यानी छाती के बल लेटकर आप कोशिश करते हैं निशाना साधने की। उस टारगेट बोर्ड पर 15 सेंटीमीटर का डायामीटर है, जिसका आपसे 50 मीटर दूर है, यानी इतनी दूरी जिसमें 5 बैडमिंटन कोर्ट समा जाए। और क्योंकि ओपन रेंज में ये होता है, यानी इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस जगह पर खिलाड़ी हैं, शूटिंग मैट है, फायरिंग लाइन है, वहां जरूर एक शेड है, वो जगह इंडोर है, लेकिन उसके आगे खुला आसमान है। उस 50 मीटर के डिस्टेंस पे खिलाड़ी और टारगेट के बीच में, और हवा के बहाव से भी फर्क पड़ता है आपकी बुलेट की ट्रैजेक्टरी पर। दस अंक अगर आपको हासिल करने हैं, जो कि सबसे ज्यादा है जो आप एक शॉट में हासिल कर सकते हैं, तो फिर आपको निशाना लगाना है केवल 1 सेंटीमीटर के उस इनर रिंग पर, यानी आपकी शर्ट के बटन जितना वो टारगेट है और 50 मीटर दूर है। आठ किलोग्राम की राइफल उठाकर मन को स्थिर रख आप कोशिश करते हैं। बीच बीच में कोचेस का भी बड़ा योगदान इस खेल में। आप देख रहे हैं कि किस तरह शॉट्स के बीच में भी कुछ सलाह मशवरा करने के लिए खिलाड़ी रुख कर रहे हैं अपने कोचेस का। और इस वक्त हमने देखा ख्वाहिश शर्मा बातचीत कर रही थी अपनी कोच से, क्योंकि पहले 2 दौर इनके बेहतरीन रहे, लेकिन इस दौर में थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। 7 शॉट इन्होंने लिए हैं, जिसमें 60 अंक अर्जित किए हैं। 394 अंक पहले 40 शॉट में थे ख्वाहिश शर्मा के, लेकिन अब 47
शॉट्स के बाद थोड़ा सा फिसलती हुई नजर आई हैं। पहले केवल 6 अंक कम थे कुल अंक जो आप बटोर सकते हैं उनमें। याद रखिए प्रत्येक शॉट 10 अंक, यानी 40 शॉट में आप कुल 400 अंक हासिल कर सकते हैं। उन 400 में से 394 ख्वाहिश शर्मा ने हासिल किए थे और अब 47 में 454 का स्कोर है, यानी अब 16 अंक पिछड़ गई हैं। वो 10 अंकों का जो फासला आ गया है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ा सा अपनी लय तलाशने की अभी भी कोशिश कर रही है ख्वाहिश, और इसीलिए शायद थोड़ा सा ब्रेक लेकर कोच से बातचीत करने गई हैं वहां पर। और इसी बीच सिफ्त कौर सामरा लगभग अपना खेल पूरा करते हुए, अंतिम शॉट बकाया है उनका। 573 अंक इस वक्त 59 शॉट के बाद। बर्लिन का वो एक स्टिकर लगा हुआ आपने देखा उनकी राइफल पर। बर्लिन जर्मनी में स्थित है और जर्मनी से खासा नाता रहा है सिफ्त कौर का, क्योंकि म्यूनिक में जो इस वर्ष विश्व कप हुआ वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इसी इवेंट में। पिछले वर्ष जो म्यूनिक में विश्व कप हुआ था वहां पर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आपको ये याद दिला दें कि 592 अंक क्वालिफिकेशन राउंड में इस वर्ष उस म्यूनिक विश्व कप में, और पिछले वर्ष 593 उन्होंने हासिल किया था। और यहाँ पर एक शॉट रहते 573 अंक है, तो कहीं ना कहीं अपने बेस्ट पर नहीं है सिफ्त कौर सामरा। इस बात का ये अंदेशा, जैसे हमने आपको बताया था कि कंपटीशन से पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ नई तकनीक हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ और उनको इस कंपटीशन में आजमाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि याद रखिएगा 4 दिसंबर से कतर के दोहा में ISSF विश्व कप फाइनल है और उसमें सिफ्त कौर सामरा प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का। लीजिए 60 शॉट पूरे हो चुके हैं उनके, 583 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। इसी बीच माहिद सांधू जो कि आगे चल रही थी लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिफ्त कौर सामरा से, वो 1 अंक पीछे रह गई। 582 उन्होंने हासिल किया है। तो अंततः सिफ्त कौर सामरा ने वो लीड हासिल कर ही ली और इस वक्त इस रिले में सबसे आगे। याद रखिएगा 4 रिले आज होंगी, यानी 4 अलग अलग बैचेस में शूटर्स आएंगे। ख्वाहिश शर्मा वापस पहुंच चुकी हैं फायरिंग लाइन पर और देखते हैं अब कोच से बातचीत करने के बाद क्या असर हुआ है। पिछले 2 शॉट्स उनके 9 और 10 पर लगे और चाहेंगी अब 10 को ज्यादा से ज्यादा हिट करने का। आपको यह भी बता दे कि अगर स्कोर टाई हो तो उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन से खिलाड़ी ने एक्स को ज्यादा बार भेदा। एक्स मतलब उस टारगेट बोर्ड का बिल्कुल सेंटर, जिसको आम भाषा में कई बार हम बुलजाई भी कहते हैं। सिफ्त कौर सामरा 583 अंक के साथ खत्म किया उन्होंने ये इस क्वालिफिकेशन दौर को। हाव भाव से आपको ज्यादा कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि अक्सर शूटर्स जब अपने जोन में होते हैं तो भावनाओं पे नियंत्रण रखना एक अहम पहलू है इस खेल का, और वही सिफ्त कौर सामरा दिखाते हुए। और इसी बीच वेदांती भट्ट ने भी अपने 60 शॉट पूरे किए। आखिरी शॉट उनका जाकर लगा 9 पर। वेदांती भट्ट जो कि सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कर रही हैं। 567 अंक उनके नाम रहे इन 60 शॉट्स में। सौम्य गुप्ता इस वक्त आपकी स्क्रीन पर
जिनको थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से जूझना पड़ा और कुछ शॉट्स दोबारा लेने पड़े, लेकिन नजरें ख्वाहिश पर होंगी क्योंकि बढ़िया शुरुआत उन्होंने की और अब वो कोशिश करेंगी कि सिफ्त कौर सामरा और माहीत सांधू को किसी ना किसी तरह पीछे छोड़े। खैर, पिछले 2 शॉट्स के बाद ये जाहिर हो चुका है कि वो ये नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगले बचे हुए 8 शॉट्स में अगर हर बार 10 भी हिट करती हैं तो भी 581 ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश का स्कोर बनेगा। और माहीत 582 के साथ ख़त्म कर चुकी हैं और सिफ्त कौर ने अपना क्वालिफिकेशन दौर 583 के साथ ख़त्म किया। तो ऐसा लग रहा है इस वक्त कि सिफ्त कौर सामरा अव्वल स्थान पर रहेंगी। युक्तिशा सिंह इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में अपने आखिरी के 5 शॉट लेते हुए 10 मिनट बकाया हैं इस प्रतियोगिता में। 12 शॉट्स सौम्य गुप्ता को लेने हैं। खुशी चुड़सामा जो कि पारुल यूनिवर्सिटी से हैं, उनके 5 शॉट बकाया। अपने पहले 2 दौर के जो राउंड थे वो बहुत जल्दी उन्होंने पूरे कर लिए थे, लेकिन अंतिम जो स्टैंडिंग पोजीशन का दौर रहा है उसमें उन्होंने अपना समय लिया है। वो थोड़ी सी चिंताजनक मुद्रा में सौम्य गुप्ता, जाहिर सी बात है पहले उनको एक लंबा डिले फेस करना पड़ा, बहुत जल्दी शूटिंग रेंज में आ गई थी ताकि अपनी आंख जमा सके। उसके बाद जब बाकी सब खिलाड़ी अपने शॉट्स ले रहे थे, इनके साथ कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कुछ रीटेक्स इनको करने पड़े, तो जाहिर सी बात है मनोबल हिलता है। लेकिन यही तो चुनौती है, लोहे सा मनोबल दिखाने की आपको ज़रूरत है। नर्व्स ऑफ स्टील जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। जरूर शरीर में ताकत, इतनी बड़ी राइफल, इतनी वजनदार राइफल को उठाने के लिए, और साथ के साथ उस वजनदार जैकेट को पहनकर इतनी दूर रखे टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने शॉट्स लेने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक मेंटल रिजॉल्व की भी ज़रूरत, एक आयरन विल की भी ज़रूरत, और उसका मुजाहरा कहीं ना कहीं सिफ्त कौर सामरा ने आज किया। शुरुआत में पिछड़ती हुई नजर आई, और जब आप दिग्गज खिलाड़ी होते हैं, आप जानते हैं कि सभी की नज़रें आप पर होने वाली हैं, तो फिर जब आप हल्का सा भी फिसलते हैं तो वो नकारात्मक थॉट्स का आना, नकारात्मक विचारों का आना लाजमी है, जो हम कहीं ना कहीं सौम्य गुप्ता के चेहरे के हाव भाव से देख पा रहे हैं। लेकिन यही चुनौती है कि कैसे आप उन नकारात्मक विचारों को दूर कर एकाग्र हो अपना बेस्ट देते हैं। ख्वाहिश ने कहीं ना कहीं वो दिखाया है। पहले 2 दौर बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसा लगता है कि थोड़ी सी थकावट, वो जो फिजिकल स्ट्रेन रहा है, इतनी देर वो जैकेट पहनकर अलग अलग पोजीशंस में शॉट्स फायर करने का, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। युक्तिशा सिंह के 3 शॉट्स बकाया, 547 का स्कोर, अब केवल 2 शॉट्स बकाया उनके। एकाग्रता का ये खेल, सटीकता का ये खेल। जगतपुरा शूटिंग रेंज जो कि जयपुर में स्थित है, वहां से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। मेरा नाम है दरपंती किया। ये दूसरा रिले यानी दूसरा बैच, इसके बाद 2 और बैच में शूटर्स आएंगे और शिरकत करेंगे क्वालिफिकेशन दौर में। इसी बीच खुशी चुड़सामा ने भी अपने क्वालिफिकेशन दौर का अंत कर लिया है सेफ्टी लॉक लगाते हुए। और आप देखेंगे कि जब खिलाड़ी पीछे मुड़कर आ रहे हैं तो जो राइफल का बैरल है वो ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। सेफ्टी रीजंस की वजह से ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बंदूक से और बुलेट से खेल रहे हैं, और इसलिए आवश्यकता कि जब भी आप पीछे मुड़कर वापस आए तो वो जो बैरल है वो केवल छत की तरफ पॉइंट करे। अगर आप किसी की तरफ
अनइंटेंशनली भी अपना बैरल पॉइंट कर देते हैं, तो चीफ रेंज ऑफिसर को, ज्यूरी को ये हक है कि आपको डिस्क्वालीफाई वो कर सकते हैं कंपटीशन से। तो हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखने की जरूरत इन शूटर्स को। आखिरी कुछ मिनटों में सौम्य गुप्ता को 5 शॉट्स और लेने हैं, ख्वाहिश शर्मा को 4 शॉट्स और लेने हैं, और वहीं युक्तिशा सिंह का 1 शॉट बकाया। चलिए 4 शॉट्स बाकी। अपनी भावनाओं से, विचारों से भी लड़ते हुए इस वक्त सौम्य गुप्ता, जिनके साथ वो सोच सकती हैं कि कुछ नाजायज चीजें हुई हैं, आज टेक्निकल फॉल्ट पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन बतौर खिलाड़ी आपको जरूरत कि आप उस पर ड्वेल ना करें और आप आगे की तरफ देखें। जो गलत हो गया वो हो गया, आप उसको एक्सक्यूज ना बनाएं और आगे की तरफ देखें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। 3 शॉट्स बाकी सौम्य गुप्ता के। युक्तिशा सिंह का 1 शॉट बकाया। सौम्य गुप्ता जो कि आती हैं पटियाला की थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। इसी बीच ख्वाहिश शर्मा भी अब 3 शॉट पीछे अपने 60 शॉट पूरे करने से। युक्तिशा सिंह ने अपने 60 शॉट में 566 अंक हासिल किए। तो इस वक्त इस रिले में जो नजर आ रहा है, सिफ्त कौर सामरा अव्वल स्थान पर, माहित सांधु उनसे केवल 1 अंक पीछे। उसके बाद तीसरे स्थान पर फिलहाल इस रिले में वेदांती भट्ट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। उनके पीछे युक्तिशा सिंह सीएसएमयू कानपुर से। ख्वाहिश शर्मा आखिरी शॉट लेते हुए 566 अंक इनके, और इस शॉट के साथ तीसरे पायदान पर इस रिले में पहुंच जाएंगी। याद रखिएगा केवल एक रिले है ये, ऐसे 4 रिलेज होंगे और चारों रिलेज में शूटर्स के क्या स्कोर रहे उसके हिसाब से रैंकिंग टेबल बनेगा, जिसके बलबूते पे इस बात का निर्णय होगा कि कौन से शूटर्स आगे फाइनल राउंड में पहुंचेंगे। चलिए समाप्ति हुई है इसी के साथ इस राउंड की भी। सौम्य गुप्ता के 562 अंक और ख्वाहिश शर्मा के 576 अंक। तो पहले पायदान पर इस रिले में सिफ्त कौर सामरा, दूसरे पर ख्वाहिश, माफ कीजिएगा दूसरे पर माहित सांधु पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और तीसरे पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश। पचास मीटर राइफल 3 पोजीशंस महिलाओं के क्वालिफिकेशन राउंड का दूसरा रिले आप देख रहे थे, और जिस बात की हमें उम्मीद थी वही हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिफ्त कौर सामरा ने इस रिले में सबसे ज्यादा अंक हासिल करके पहली पोजीशन पे खत्म किया, लेकिन तुरुप का इक्का साबित हुई माहित सांधु, जो लगातार फाइट्स दे रही थी सिफ्त कौर को, और अंततः केवल 1 अंक पीछे ओलंपियन सिफ्त कौर से 582 अंक उन्होंने कुल हासिल किए। तीसरे स्थान पर ख्वाहिश शर्मा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, चौथे पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय वेदांती भट्ट 567 अंक उनके। सीएसएमयू कानपुर से युक्तिशा सिंह 5वें स्थान पर 566, पारुल यूनिवर्सिटी की खुशी 565 और सौम्य गुप्ता 562।
Yes, avoid.